Welcome to part 3 of the video. I am Poonam Dua from MA Education Academy of Literature. In this part, we will discuss JMI MA English Entrance 202 question paper just like the previous two videos. Please note down your own score and mention the same in comments. Question number 21. 20 questions we have already covered in previous two videos. In Homer's Iliad, who is the leader of Greek army? The Iliad, जो कि एक ancient Greek epic poem है and it is traditionally attributed to Homer. It is set during the Trojan War, which was a 10-year siege of the city of Troy by a coalition of Greek states. In the Iliad, the Greek army is led by Agamemnon, the king of Mycenae. So option number A is the right answer. Next question. Zeus is the other name for Zeus, जो कि गॉड हैं, गॉड ऑफ स्काई, लाइटनिंग एंड थंडर इन एंशियंट ग्रीक रिलीजन एंड लेजेंड्स एंड द रूलर ऑफ all gods on Mount Olympus. The most powerful of all, Zeus, was god of the sky and the king of Olympus, and the sky god variously known as Zeus or Jupiter as well. So Jupiter here is the correct answer, correct option. Option number C is the right answer. Next question. Aspects of Novel is a book by whom? Aspects of Novel is a book compiled from a series of lectures delivered by option number A, E.M. Forster's. And E.M. Forster delivered these lectures in 1927 in which he discussed the concept, the aspects of English language novels. So option number A becomes the right answer, E.M. Forster. Next question, question number 24. In a literary work, allusion refer to which of the following? Allusion एक figure of speech है जिसमें किसी object को, circumstance को किसी unrelated text के साथ indirectly refer किया जाता है. So allusion is basically when an author or poet makes an indirect reference to some other idea, other figure, other text, other place or other event that originates from आउटसाइड दी टेक्स्ट. एक एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं एल्यूजन को. लुक एट दी सम कॉमन एल्यूजन एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ. लाइक अगर हम किसी पर्सन को बोलते हैं डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, तो रोमियो वर्ड यूज कर हम क्या यूज करें, एक तरीके का रेफरेंस यूज करें टू वर्ड शेक्सपियर्स रोमियो हु वॉज अ पैशनेट लवर ऑफ जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट. सो दिस इज वॉट वी कॉल एल्यूजन. सो हेयर ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द राइट आंसर. Reference to other literary sources. Next question. A literary symbol combines an image with a which of the following? तो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं symbolism की. A symbolism is the representation of some object, idea or concept with another object. जैसे कि हम कभी बोलते हैं a red rose. तो हम कलर रेड को किस तरीके से रेफर करते हैं? कलर रेड कैन स्टैंड फॉर लव और रोमांस. एक ब्रोकन मिरर दिखाकर किसी मूवी में कोई डायरेक्टर शो कर सकता है किसी तरीके का सेपरेशन. सो दैट इज अ representation of one idea, one concept. So the correct answer is option number B, concept. Next question. The Rape of the Lock is a heroic comical poem in 5 cantos dedicated to which of the following personality? The correct answer. Let me tell you about the poetry first before telling you the correct answer. The Rape of the Lock is a mock heroic narrative poem written by Alexander Pope and the dedication is given to option number A, Elizabeth Fermor. The poem satirizes a very small incident by comparing it to the epic world of gods. Option A, Arabella Fermor is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्कर वाइल्ड से रिलेटेड है और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय ऑस्कर वाइल्ड. तो आप लोग नॉट पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत ही अच्छे आयरिश पोएट और प्ले राइट रहे हैं एंड इस लिस्ट में से शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज द राइट आंसर. दिस इज अ कॉमेडी बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड इट वॉज first performed in 1773. Rest all are written by Oscar Wilde. Next question. Which of the following Indian writers is not a poet? तो यहाँ पर भी आप not पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा.
Out of these, Arundhati Roy, option number C is the right answer. She is not a poet. Arundhati Roy एक Indian author है, best known for her novel The God of Small Things, which won the Man Booker Prize for Fiction in 1997 and became the best-selling book. So Arundhati Roy, option number C, the right answer. Next question. Question number 29. Which of the following is not a character of Charles Dickens novel? तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले पिप है. पिप, जिसका कि पूरा नाम था फिलिप पेरिप, कॉल्ड पिप, इज द प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर इन चार्ल्स डिकिंस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो कि 1861 का एक नॉवल है. एंड आई बिलीव ही इज अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. नेक्स्ट ऑप्शन देखिए. नेक्स्ट ऑप्शन है एबेनेजर स्क्रूज. एबेनेजर स्क्रूज इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ चार्ल्स डिकेंस 1843 novella A Christmas Carol. At the beginning of the novella, Scrooge is very cold-hearted miser who hates Christmas, and this character is used as an allusion also. अगर हम किसी को Scrooge कहते हैं तो that means we are calling that person as one who is never happy. नेक्स्ट कैरेक्टर यूरिया हीप. यूरिया हीप नाम का कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं. क्या ये डिकेंस का कैरेक्टर है या नहीं है? यूरिया हीप इज अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय चार्ल्स डिकेंस इन हिज 1850 नॉवल डेविड कॉपरफील्ड. हीप इज वन ऑफ द मेन एंटागनिस्ट्स ऑफ द नॉवल. तो करेक्ट आंसर अब हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर डी. दिस इज द करेक्ट आंसर. रूपर्ट बर्किन. रूपर्ट बर्किन एक फिक्शनल कैरेक्टर है इन द नॉवल विमेन इन लव, जो कि 1920 का एक नॉवल है बाय द नॉवेलिस्ट D.H. लॉरेंस. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. All the world is a stage and all the men and women are merely players is a quote from which of the following play? The correct answer is option number D. All the world is a stage is the phrase that begins a monologue from William Shakespeare's pastoral comedy As You Like It, spoken by the character Jacques. So option number D, As You Like It, is the right answer, right option. So here I end this part of the video. Further part will be uploaded very soon. In the meanwhile, channel को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि फर्दर पार्ट्स की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे. And you may WhatsApp at the given number in the description to join our online classes. Please tell me your score out of 10 in comments. Thanks for watching this video and best of luck for the result of this exam, and a great good luck for any of the further exam that you appear for in your life.